Hi everybody, good morning. From the last video, as I was talking about movement of wild animals during the winter season in these mountains, I was especially talking about bears and the movement of bears and what they eat during this time of the year. So from the past 2 days again I have been following their scat trails. So I had found some fresh scat samples here and there in these mountains behind me. What I understood was also that again the bear was feeding on the same fruit called khat and probably moving around the valleys during the nights, because every day in the morning when I used to come for a walk in the morning, I used to see some fresh scat. And also, as we all know that bears are omnivores. They not only feed on fruits but also sometimes prey upon any animal, especially like sheep and goat of the Gaddi tribe that move around in these mountains with their sheep and goat. Sometimes they also prey upon the cattle of the villagers who bring their cattle up into the mountains. When the Gaddi tribe bring their sheep and goat and move around these mountains here, what the bears and other wild animals like leopards do is that they kind of follow the sheep wherever these shepherds camp for the night, and sometimes come during the night and attack the sheep and goats to feed on them. Now, if you try to understand the movement of Gaddi people along with their sheep and goats in the mountains here, you'll also slowly understand that there's a close interrelation between the movement of other wild animals in these mountains, because when there's scarcity of food for the wild animals, they eventually try to prey upon the domestic sheep and goats of these Gaddi tribes. So like this the cycle continues and goes on. This is a very tricky situation, how these people have to find some survival for their sheep and goats along with their own survival while they live in the wilderness of these mountains with the wild animals. Continuing my research and tracking the wild animals around these mountains, today what I decided was to go and meet some Gaddi shepherds here in the mountains and talk to them about their movements and also understand the movement of wild animals through their experiences and incidents that they must have faced in the mountains during their travel, and also get some stories from them. इस साल आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो? हम तो लोड में भी घूमे हैं, हाँ चंबा में भी घूमे हैं, हाँ चंबा बरमोर में भी, बन्नीधार में भी, हाँ होली में भी, हाँ। नामू में भी बहुत घूमे। अच्छा, जैसे आप अलग अलग जगह घूम रहे हो ना, कभी कभी जैसे भेड़ बकरी के साथ चलते चलते पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जंगली जानवर आ जाते खा जाने, है ना? कौन सा जानवर इस साल मिला आपको? एक ही मिलते रहते हमारे को, जो भालू भी मिलता है, हाँ चीता भी मिलता है। हाँ ये भालू दो तरफ के होते हैं, हाँ एक लाल वाला होता है, काले वाला होता है। हाँ बिल्कुल। लाल वाला भी मिल जाता है, काले वाला भी मिल जाता है, चीता भी मिल जाता है। हाँ, लाल वाला किस एरिया में मिलता है आपको? लाल वाला चंबे वाले, चंबे से ऊपर ना, चंबे वाले, चंबे वाली दाल। हाँ जी, उससे नीचे तो काले वाले मिलेंगे। और जैसे आप देखते रहते हो, लाल वाला ज़्यादा होते हैं या काले वाले? काले वाले ज़्यादा होते हैं, है ना? और काले वाले थोड़ा छोटे भी होते हैं, लाल वाले थोड़े बड़े होते हैं। अच्छा,
अकेले अकेले घूमते ये बालू, तब तभी भी कुछ नुकसान करते हैं या केला केला करता नुकसान, 2-3 हो तो कम करती है। अच्छा 2-3 हो तो कम करते हैं, तो वो अपने अपने में रहते हैं। अपने अपने रहते, अपने मस्त रहती है। अच्छा नुकसान तो वही करता है जरा इनको गीजा होता है, हाँ वही करता, बाकी जो बीच में भी चुकते रहते वो नहीं करते। अच्छा वो नहीं करते ना, वो अपने अपने का काम करते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सही है। हाँ मैं बस यही चाह रहा था कि थोड़ा बातचीत करें। आप अपना भेड़ बकरी को लेके जैसे पहाड़ों में घूमते हो ना, तो कभी कभी जंगली जानवर जैसे भालू या लोमड़ी या ऐसा कुछ जो भी होता है, तो वो सारे जब आते हैं नुकसान होता है ना, तो आपका कुछ भी तो कहानी होगा, ऐसा कभी कुछ हुआ है तो कुछ बता सकते हो ऐसा? एक बार अगन बालू ने बकरी पकड़ ली थी ना वहाँ बीच में ही, चरते चरते, हाँ और हमने उसको थोड़ा हल्ला उल्ला किया, उसके बाद उसने छोड़ी, हाँ कुत्ते कत्ते पड़ गए थे हाँ साथ में, हाँ और भगा दिया बालू को। अच्छा उसके बाद बकरी को मैंने वहाँ से उठाकर डेरे को ले गए। अच्छा बच गया बकरी? हाँ जी बच गया, उसके बाद उसको फिर दे दिया खाना। अच्छा हाँ जी बकरी फिर वाली वैसे तो जिंदी थी, अब वो कामयाब नहीं थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और कभी कभी मार भी लिया होगा और वो पकड़ के भाग भी गया होगा, ऐसा कुछ कहानी जो भी आपके साथ हाँ हुआ? जी ले जाता कई बार, रात को तो नहीं लगता पता। अच्छा हाँ जी ले जाता उठाकर, अच्छा उसके रात। पीछा करते हैं, पीछे काम वो छोड़ता नहीं, कई बार तो ले जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और आप अपने आप को कैसे बचाते हो और बच के रहते हो? भागना पड़ता ना उससे, हम्म टॉर्च टार्च लेके उसके जरा भागना पड़ता है जल्दी से। हम्म कुत्ते पड़ जाते हैं, कुत्ते बजा लेते हैं, तो बंदा तो छोड़ना नहीं। अच्छा ना जहाँ पर माल बैठता वहाँ के आगे पीछे आग जला देते हैं। हाँ आग से डरता थोड़ा है। आग से जानवर डरते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो आग वो से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आग से उनको पता लगता है ना भी आग में जली हुई कुछ नहीं कुछ यहाँ पर है। हाँ it was very nice and interesting to go up into the mountain and meet the Gaddi shepherds who are camping up here in the mountains right now before they go into the lower valleys of Punjab with their livestock, which is sheep and goat. It was quite interesting for me because I was only looking for some information about tracking the wild animals around these mountains wherever they go and camp, because the animals sometimes would come to feed on their livestock. But not just that, one old shepherd not just gave me that information, but he also was speaking about different types of bears that he saw up here in the mountains, basically in the Kangda Valley here and the Chamba Valley behind these mountains. So he was speaking about two species of bears, which is Asiatic black bear and brown bear. Basically, he saw a lot of black bears in comparison with the brown bears. So this information was very nice to hear from him. And like this, I was only just hoping to get some information about the animal movement. But when he told me about the different species and also the population of different species that he see around these mountains, it was very nice to learn about it from them, because they are the ones who really go up here in the mountains and walk up to the places where they take their sheep and goat for grazing. So they really have a chance to encounter with the wildlife very closely and observe them. So like that, with more observations, research, study, and more information from different sources, we understand the movement of wild animals and keep a track of the areas where they move around here in the mountains. Thank you.